स्टेट बैंक जो है उसके पास सोना और चांदी नहीं होता. It holds US dollar assets. वो अमेरिका के डॉलरों को दौलत में रखता है. So your little rupee is nothing but a little dollar. इसलिए कि आपका जो कानूनी रुपया है, इस कानूनी रुपया के कानूनी डॉलर है. While you are using your rupee, you are supporting United States. जब आप एक रुपये के अंदर करते हैं, तो आप करते हैं तो मेरे डॉलर आप उस डॉलर के साथ अपने आप को बांध रहे हैं. You are paying with your rupee for the drones they send back to you in thanks. आप जो कुछ रुपया खर्च करते हैं और क्योंकि वो डॉलरों के अंदर बैंक के अंदर होता है, उससे जो चीज खरीदी जाती है उससे ड्रोन आते हैं जो आप डिजाइन कर देते हैं और उनका कर आते हैं. We started the gold dinar, this gold dinar that you can see here, we started in the city of Granada in Spain. हमने गोल्ड दिनार शुरू किया इसी वक्त के लिए. Is where I became Muslim. I come from Al-Andalus. In front of you is a Muslim of Al-Andalus. मैं मुस्लिम का एक मुसलमान हूँ. We started in the year 1992. हमने इस काम का आगाज 1992 में किया. And we started minting gold and silver coins and we distributed throughout the Muslim world. और हमने सोने और चांदी के सिक्के बनाने शुरू किए और ताकि उसको लोग उसके अंदर बचत कर सकें. The first prime minister, Muslim leader, to respond to our call was Necmettin Erbakan, former president of Turkey. हमारी बात पर सबसे पहले इस शख्स ने जब बैठ था वो तुर्की के नेस्मेतीन एर्बकान थे. Necmettin Erbakan said, the dinar and the dirham are the currency of the Muslim nation. उसने कहा कि दिनार और दिरहम मुसलमान उम्मत की करेंसी होनी चाहिए. The day after his announcement, the news appeared in Wall Street Journal in New York. Headlines in first page. Erbakan is now saying that the Muslims should have a gold coin. तो उससे अगले दिन वॉल स्ट्रीट जर्नल के अंदर ये खबर छपी कि देखो ये शख्स क्या बात कर रहा है. The West took notice of what he was saying. दुनिया ने फौरी तौर पर नोटिस किया. The Muslim world didn't. लेकिन मुसलमानों ने Necmettin Erbakan was thrown out of government in a famous military coup. And he was not allowed to implement the gold dinar in Turkey. When I met him in Istanbul while he was still prime minister, I went to see him to his office and he told me, the only condition that they have put for me to remain in power is that I have to abandon the policy of the gold dinar. उसने कहा कि मेरे इस हुकूमत में रहने की वाहिद शर्त तैयार की गई है कि मैं सोने और चांदी के सिक्के यानी दिरहम और दिनार की पॉलिसी को तक कर. So the kuffar knew that this was a dangerous matter. The second political leader who responded to our request was the former Prime Minister of Malaysia, Dr. Mahathir Mohamad. दूसरा ने हमारी बात सुनी और सोचा कि हम इस पे काम करेंगे. वो महाथिर मोहम्मद थे, मलाइका के सरबराह.
Mahathir Mohamad went a little bit further. He said the gold dinar must be the currency of an Islamic trade bloc, like the European Union. He said paper money is completely worthless. And this is important because he was the Prime Minister of a country with a central bank who prints paper money. Dr. Mahathir went to Doha in Qatar and he begged the Arabs, he begged them, stop selling the oil for pieces of paper, he said. Dr. Mahathir Mohamad ने इस्लामी सरकारी कानून में गया और उसने भीख मांगी कि खुदा के लिए तेल को कागज के टुकड़ों पर फरोख्त करना बंद कर. And he demanded from the Arabs to sell the oil for gold. और उन्होंने उनसे कहा कि अपने तेल के बदले में उनसे सोना के मांगो या सोना. Because if we demand gold and silver for our oil, the US dollar will last 24 hours. उसने कहा कि अगर हम डिमांड करते हैं तेल के बदले में गोल्ड, दिनार, सोना या चांदी, तो सिर्फ 24 घंटे के अंदर यूएस डॉलर दुनिया के नक्शे से खत्म हो जाएगा. They depend on us. We do not depend on them. वो हम उनकी मजबूरी है, वो हमारी मजबूरी नहीं है. And now I ask you, in the light of this, who is the strong and who is the weak? अब मैं इस रोशनी में आप लोगों से सवाल करता हूँ, कौन ताकतवर है और कौन कमजोर है? Why do we behave as if we are the weakest when we are the strongest? इसलिए हमें आपको यकीन हो जाना चाहिए कि हम स्ट्रॉन्गेस्ट हैं, हम ताकतवर हैं. And we are strongest because we have Islam with us. हम इसलिए ताकतवर हैं. हमारे पास इस्लाम है. Islam is our strength. इस्लाम हमारी ताकत. If we want to gain this strength, we have to obey Allah subhanahu wa ta'ala. अगर हम ताकत हासिल करना चाहते हैं, तो हमें अल्लाह के अहकाम मानना. Look, we live in a world divided. We are divided in 20, 25 tiny little countries. We, the Muslims, we are divided in 20, 24 little countries. You look at ourselves, and we are nothing but division. Nothing but division. Internally, in ideas, small conflicts of every kind. We look pathetic. And yet, we are the strongest. Shall I repeat? We are the strongest. We are divided. Yes, we are divided. And we look bad. But yet, we remain the strongest. For you must know with certainty, our difficulties,
are nothing in relation to the difficulties that the kuffar face. अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो हम उतनी ज़्यादा मुश्किलात का शिकार नहीं हैं जितनी मुश्किलात में इज़्ज़त-ए-नबिया के ज़माने के अंदर हमारे सहाबा ने थे। They are more divided than we are. They are more confused than we are. जी, इस ज़माने के कुफ़ार हमसे ज़्यादा कंफ्यूज थे, हमसे ज़्यादा इसे कहते हैं कि समझ नहीं आती उनको चीज़ों को। But we can solve two problems at once. लेकिन हम दो चीज़ों का मसला हल कर सकते हैं, बड़ी सबसे पहले हल कर सकते हैं। If we obey Allah, we will unite our people. अगर हमें इस बात का अंदाजा हो जाए, अगर हम इकट्ठे हो जाए, and the kuffar will have to follow us. तो तमाम कुफ़ार हमें फॉलो करेंगे, हमें पीछे चलेंगे। The days of the US dollar as the currency of the world are counted. गिने जा चुके हैं अमेरिका के डॉलर के पूरी दुनिया की करेंसी होने के लिए। The crisis that is coming, it will become the largest crisis in the history of capitalism. जो तूफान आने वाला है, ये तूफान सरमायादाराना निज़ाम की तारीख का सबसे बड़ा तूफान। This is not an hypothesis. This is mathematics. ये कोई मैं अटकल पच्चू नहीं कर रहा। Never. ये मैथमेटिक्स है, हिसाब की बात है, सोच है। Never in the history of capitalism we had these incredible levels of debt. हमने कभी सरमायादाराना निज़ाम की तारीख में इतना ज़्यादा कर्जा किसी कौम को ऊपर नहीं देखा। By comparison, the crisis of the 1929 looks like a hiccup in relation to what is coming. 1929 का जो वार्षिक बहरान आया था, उसके बाद में बिल्कुल बारिश में खतरा था। And those of you who can read English, I encourage you to read the book The Dollar Crisis by Robert Duncan. He's one of the many who has proven that mathematically the US dollar will collapse. ये एक खालिस्तान दाखिलात की बात है कि जो हालात कर्जों के जा रहे हैं दुनिया के, अमेरिका का डॉलर एक दिन फर्क हो जाएगा। Robert Duncan is the author, and the book is called The Dollar Crisis. किताब का नाम है डॉलर क्राइसिस। Robert Duncan. उन्होंने इस किताब के अंदर डॉलर क्राइसिस का पूरा जायजा लिया। So what is going to happen at that moment, at that juncture? क्या होगा जब ये वक्त आएगा इस दुनिया पर डॉलर कम होने लगेगा? Some people are advocating the creation of a world currency. कुछ लोग एक पुअर करेंसी, एक गरीब किस्म की एक करेंसी को की वकालत करते हैं, which is the ultimate tyranny. जिसका कोई तोड़ नहीं, जिसका कोई जवाब नहीं। There will be one World Bank, one central issuing authority, one single currency for the whole world, and one government for the whole world. वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर एक बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, एक ही करेंसी हो, एक ही किसी तरह का चार्ज के जरिए एक नोट सामने आए। It has been spoken by people with great importance, such as Sarkozy. इनमें से बहुत सारे आंतरिक लीडर जैसे सरकोजी जैसे लोग हैं, वो भी इसकी वकालत करते हैं। The French Premier, and even George Bush was talking about this world government. जी जॉर्ज बुश इस तरह के और दूसरे लीडर भी इस वर्ल्ड गवर्नमेंट और वर्ल्ड करेंसी की बात करते हैं। It will be the ultimate triumph of riba. ये दुनिया की तारीख का It will be riba. It will be riba reaching its maximum possibility. ये सूद अपनी आखिरी हदों को छुएगा जब इस तरह का निजाम
They will have the whole world under their thumb. ये पूरी दुनिया एक दूसरे के लिए आ जाएगी। And perhaps this is inevitable. और यही सूरत-ए-हाल होगा। Because it's technically possible. This world, which is technically driven, will probably reach its maximum potential. लेकिन ये तकनीकी तौर पर बहुत मुश्किल नजर आता है। But what I can tell you is what will happen next. लेकिन मैं बताता हूँ कि आगे क्या होगा। When they reach up there, जब वहाँ पहुँचेंगे, Islam will become the only voice of freedom in the entire world. तो इस्लाम ही एक रास्ता रह जाएगा जिस तरफ लौटने में आप देखो। And our dinar and our dirham will become the expression of that freedom. और हमारा दिनार और दिरहम उस चीज की अलामत बनेगा, उस पता है। Look, what is the position of Islam regarding money? देखिए इस्लाम इस मसले में क्या कहता है? What does the fiqh of Islam says about money? फिर क्या कहती है इस्लाम इस मामले के? The Sharia says, शरीयत के मुताबिक, based on the ayat of Quran, that says, Allah subhanahu wa ta'ala says, tijaratun a'an taradin minkum. Tijaratun a'an taradin minkum. Which means, trade with mutual consent. आप ट्रेड आप तिजारत एक दूसरे के साथ कहानी लगाने के साथ। The position, when Allah subhanahu wa ta'ala says, trade with mutual consent, He doesn't say, trade with mutual consent, except with money. Money can be a monopoly. No, He doesn't say that. जब ये अल्लाह ताला म्यूचुअल कॉन्सेंट के साथ ट्रेड की बात करता है, फरमाते हैं कि उसके बाद ये नहीं कहता कि दोनों के साथ तिजारत की जाए। The government doesn't have the authority to impose upon you the medium of exchange. ये हुकूमत को मुकम्मल तौर पर ये इख्तियार नहीं है कि दो लोग जब तिजारत कर रहे हो तो वो किस चीज को मुआवजे की शराब कराए। Not even the gold dinar. जहाँ तक कि वो गोल्ड दिनार भी नहीं, बकरी की ले सकता है, बकरी के दिरहम भी ले सकता है। The Muslim government cannot tell you the only currency in Pakistan is the gold dinar. कोई भी इस्लामी ममलकत ये नहीं इख्तियार रखती कि हमारे पास वही करेंसी होगी जिसे गोल्ड दिनार कहते हैं। Because the government doesn't have that authority. इसलिए कि किसी भी चीज के साथ हुकूमत को ये इख्तियार हासिल नहीं है कि ये इस तरह के करेंसी जो है उसको ना किया जाए। The job of the government is to tell you that you are free to choose. ये हुकूमत का इख्तियार है कि तुम्हें ये इख्तियार दिया जाए कि तुम किस चीज को आप अपने शरीर के पास ला सकते हैं। So what is the position of Islam regarding money? तो इस्लाम का दौलत के मामले में क्या मामला है? The position of Islam is that you are free. इस्लाम दौलत के मामले में शरीयत तबादला के मामले में फरमाते हैं आप आजाद। The position of Islam regarding money is freedom. इस्लाम इस मसले में मुकम्मल आजादी देगा। And that is why the first generation of Muslims, they use gold and silver and dates and salt and cereals and many other commodities. इसीलिए गुरुए खुला के मुसलमान जो थे गोल्ड और सिल्वर भी आपस में कारोबार में लेते थे और जौ भी लेते थे और सत्तू भी लेते थे और लेते थे। But according to Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, in his Tafsir al-Quran, Ahkam al-Quran, Qadi Abu Bakr ibn al-Arabi, the Qadi, there are two Ibn al-Arabis, the Sufi and the Qadi. He wrote a book called Ahkam al-Quran. And he wrote, the obligations of the Sultan are 7.